Today we are going through the demonstration based on the pitch points and sharp edges. The most importantly, every time we alert you that this is the most important, how we can protect our hands is the most important, the most precious, the most valuable for our, this is once a time the God has given to you, so that's why I always told you that you have to be most careful about your fingers. This 10 fingers is most important. Once a time God has given to you. You have to be protected, and all the time you have to be approved, and appropriate gloves would be used all the time. Use the right gloves, right job in the right way. So that's why we are a demonstration here regarding the different fingers cuts by the. So first of all, we have to start it from here. This is some cut marks. Maybe you people are grinding hot water. You are not using the handle with the guards. So all the time, this is the company designed, especially designed for using properly handle and best, and properly hold your situations that how you will doing the grinding. So that's why always the company, the manufacturer design handle and guards for your protection. So always take care and remove these things in proper way. These hands are cut due to the people is not taking attention towards the job. So that's why every day I remind you that you have to be concentrate on your job. If you're not concentrate on your job, possibly cut your fingers. Otherwise, this hands, one hands, the father hands, other one is the son of his, the son of that's very family. So you have to be take care of your, if you are safe in that way, you have to go by the safe way. So every time you have to be thinking about your family members. You are thousands of miles away from your country. So this is most importantly, you also take care about your life. The self-protection, that is called safety. So every time, this is also some of the design here, the pictures shown by our management that is showing you the safety awareness for our people, how you will protect and keep safe. This is the another hands is showing that. And here also pitch points, sometimes a little bit jobs and you are not using hammers and not you properly using the hammers with a cracked handle, certain examples of damaged tools. So always use the gloves. I always told you, if you're using the gloves, there is a little chances of any accident and accidents. So every time you have to be alert. See, this is the faces, hand safety. 92% of accidents can be prevented by the gloves. So could be prevented by the gloves. So every time you have to check out that's the signs, hand injuries impact your life and small pinches, because the 27 bones, take attention towards here, 27 bones in one hand, 27 bones. तो हम लोग को क्या करना चाहिए, स्वयं को शिक्षित करना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने हाथों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेंगे। हम आपको सावधानी करना चाहिए, पूर्व दृष्टि लगाना चाहिए किस प्रकार का खतरा हो सकता है। इसलिए हमेशा हमको अप्रोप्रिएट ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, जिस प्रकार की आवश्यकता है हमारे काम की, उसी प्रकार का हमको लेना चाहिए। आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर्स और फायरमैन को, ताकि आप सुरक्षित हैं, हमारी कंपनी सुरक्षित और सारा कार्यस्थल, कार्य क्षेत्र, कंपनी सब कुछ सुरक्षित है। इसलिए इन बातों का ध्यान में रख करके बेहतरीन तरीके से काम करें। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि आप लोग यू पीपल आर यूजिंग हैंड्स वाइल लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग के समय में आप लोग क्या करते हो, यूज़ करते हो अपने हाथों को। तो इसमें देयर इज अ चांस, समय हो सकता है कि आपका हाथ फंस जाए, क्रस्ट हो जाए। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक कॉलम्स को आप ले जा रहे हैं या फिर सपोर्ट्स को लगा रहे हैं, तो हमारा ध्यान एक सिग्नल मैन जो है, उसका एक आदमी जो निर्देश देने वाला है, वो सही तरीके से निर्देश देगा, तो किसी प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए एवरी टाइम जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, उसको चेक करें, उसकी मशीन कैसा है, उसको नहीं सही से चेक करेंगे। 300 माइल्स पर आवर के हिसाब से ये जो व्हील घूम रहा है, 300 माइल्स के हिसाब से कटिंग व्हील यूज़ कर रहे हैं आप लोग ग्राइंडिंग